Hello, my dear students of class 10th. In our last class, we have already read about the lesson, the second chapter of your English course, A Letter to God by G.L. Fuentes. And after totally completion of the lesson, teaching of the lesson, I have already instructed you to write the answers that questions are written on the exercise of your book, exercise in your book. So we had completed question number 3 up to question number 3 at page 12. Open your book at page 12 and look at the questions. They are written. Totally 11 questions are there. This type of questions may be asked by the board, and the answers would have been written in your OMR sheet. That means the objective types sheet. They are given 4 options A, B, C, D. You have to choose the right answer and darken the particular answer, darken the particular right answer. So then you can get 1 mark. You can get 1 mark from that questions. What did Lencho leave? I have told you. What did he hope for? He hoped for a downpour or at least a shower for good harvest. What did he say about the raindrops? The raindrops falling from the sky are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the small ones are 5s. Also, these questions we have discussed in our previous classes. You may look at your notebook. That English copy that we have already written it. पिला मैंने टिके ध्यान देव तुम्हार इंग्लिश कॉपी रे जो लिखुच, that means you should open a notebook that the YouTube class or the online class taught by Mr. K.C. Panda. You may write it in your separate notebook and note it down, so that our lessons are always the both side knowledge oriented and exam oriented. So you should listen to your teachers very mindfully. First of all, this is your primary goal, that it should be that means your valuable motto, that you must understand the lessons by listening to your teachers attentively. Question number 4. How did the rain change? वर्षा होतिला किपरि भाबरे वर्षा बदली गला, किपरि बदलिला? The rain changed and suddenly a strong wind blew. The rain changed, suddenly a strong wind blew and hailstones began to fall. वर्षा बदली गला, वर्षा बंद हो गला, पवन बहिला, पवन बहिबा संगरे कुआ पत्थर माड़ हला. That is the answer. Means the hailstones began to fall. Again I say the answer. How did the rain change? The rain changed suddenly and a strong wind began to blow. With the rainfall, hailstones began to fall. Question number 5. What happened to Lencho's cornfield? Write it down. I tell you very slowly. In a slow speed, I am telling you that what happened to Lencho's cornfields? Lenchor cornfield re kono ghotila? Happen mane ghotiba. That means occur. Kon occur. OCC you are occur. What happened to Lencho's cornfields? Question number 5.
You need not write the questions. You need not write the questions because the questions are written on the book. Only you should read that. You should note it down that the page number 12, question number 5. What happened to Lencho's cornfields? Lencho's cornfield कौन घटिला? Lencho's cornfield was totally destroyed by the hailstorm. Lencho's cornfield was totally destroyed by the hailstorm. Hailstorm माने STORM storm. HAIL hail STORM storm. Hailstorm कुआपथर झड़ रे तार फसल सब नष्ट हो गला, destroyed. Come to question number 6. Who did Lencho have faith in? Very simple. Who did Lenchos have faith in? Lencho ro faith कोठी थिला? क्वेश्चन रे आसीबो A postman, B postmaster, C God, D his wife. His wife. In the चारटा ऑप्शन थिबो, चारोटी ऑप्शन तुम पई थिबो. You have to darken it. कोटा हो? What I did say you in serial number 3 or C God. God रे तुम darken करियो को अछि. Answer is who did Lencho have faith in? Answer will be Lencho had a deep faith in God. God भगवान को ऊपर तार पूर्ण विश्वास थिला. Question number 7. Who did he write a letter to? का पाखो को लिखिला? To God. He wrote a letter to God. Who read the letter? चिट्ठी को किए पढ़िला? ABCD चारटा ऑप्शन थिबो. पोस्टमास्टर पढ़िले. चिट्ठी को एक्चुअली पोस्टमास्टर पढ़िले. पोस्टमैन हैंडओवर कला चिट्ठीटा पोस्टमास्टर को. But in reality, postmaster himself read the letter. Question number 9. What did the postmaster do? Postmaster कौन कले? Answer is, you may write. I tell you in slow speed. The postmaster came up with an idea. The postmasters came up with an idea to answer the letter of Lencho. Came up with an idea to answer the letter of Lencho. Full stop. He also sent money to Lencho. He also sent SENT. He also sent money to Lencho by the name of God. भगवान का नारे से किछि टंका भी पठेले. के? पोस्टमास्टर. Question number 10. Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? Question number 10. Look at your book. Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? Lencho surprise हला कि Lencho आश्चर्यान्वित हला कि चिठीटा पाई करी पैसा भी पाई करी with money पाई करी हला कि? No. Answer is no. He was not surprised. Not a slightest surprise was seen in his body. That is written in the book. एटा पोस्टमास्टर देखी दिले. Question number 11. What was Lencho's reaction after getting the letter? चिठी पाइबा परे Lencho रो रिएक्शन कोन थिला? रिएक्शन माने प्रतिक्रिया. तार प्रतिक्रिया कोन थिला? Lencho रो भाव किमती थिला चिठी पाइबा परे. Question number 11. Look at your book.
What was Lencho's reaction after getting the letter? Lencho reacted that God could have made mistake. God couldn't, that means could not. God could not have made mistake. Full stop. God could not reject his request. God could not reject his request. That means definitely God will accept the request of Lencho. God will accept, God will listen the prayer of Lencho. This was the confidence, self-confidence of Lencho. That is, the answer will be of the questions number 11, page number 12. Then there has been a vocabulary exercise in question in page number 13. You can write it. ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି you have to know general knowledge so many name of the cyclones storm ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଏମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର particular permanent ନା ଅଛି ଆମେ ଯେଉଁ local ନା ଆମେ ଶୁଣୁ local ନା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ there are local names weather scientist ମାନେ ତାକୁ ନାମକରଣ କରିଥାନ୍ତି ଫନି ହୁଡୁଡ୍ ତିତଲି many names are there okay so they comes for some time and they also vanished after a while after 2 or 3 days that is also cyclone but these cyclones are permanent এটা permanent cyclones गुड़ाक लेखा अछि बहिरे लेखा अछि देखो क्वेश्चन नंबर 13 परीक्षा रे पढ़ी पिले examinations most possibility examinations that 1 or 1 mark will come from this type of questions. There are different names in different parts of the world for storms depending on their nature. तांकर नेचर अनुसार प्रकृति अनुसार विभिन्न प्रकार ना अछि पृथ्वीर विभिन्न पार्ट्स रे स्टॉर्म मानकर विभिन्न प्रकार ना अछि ट्राई टू मैच द नेम्स इन द बॉक्स विथ देयर डिस्क्रिप्शंस बिलो तले डिस्क्रिप्शन दिया जाई छी आ गोटे बॉक्स दिया जाई छी बॉक्स भीतर स्टॉर्म मानकर नाम अछि क्यों तांकर डिस्क्रिप्शन अनुसार बॉक्स रो क्यों नाटा अटैच हे परिबो दैट मींस द राइट साइक्लोन right storms and fill in the blanks you may take the help of a dictionary pilayat mein dictionary ro help so bole dabo frequently you should take the help of dictionary also always you can find very easily access dictionary is easily access with your mobile phone you can know the meaning कौन अच्छी ब्रेक बॉक्स भीतर कौन अच्छी पढ़ला बॉक्स भीतर कौन अच्छी गैल व्हिरलविंड साइक्लोन हरिकेन टर्नाडो टाइफून पृथ्वी क्यों अंचल रे एटा सृष्टि हुए डिस्क्रिप्शन अच्छी ताकू तुम अटैच करिवार अच्छी केतोटी अच्छी there are 6 name of the 6 cyclones 6 cyclones or storms नाम अछि क्वेश्चन नंबर 1 at page 13 पृष्ठ 1 नंबर a violent tropical storm in which strong winds move in circle try to understand this you have also perhaps already known more or extensively than in your geography course रे एटा किछि अछि ए भायोलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म भायोलेंट बहुत क्षिप्र वेग रे माने पवन रो वेगटा बहुत बेसी सेटा को भायोलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म ग्रीष्म ट्रॉपिकल माने ग्रीष्म संबंधी ग्रीष्म देशीय ट्रॉपिकल ग्रीष्म प्रधान देश मान को ट्रॉपिकल कंट्री कहंती एटा गोटे ग्रीष्म प्रधान स्टॉर्म टे भायोलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म
in which strong winds move in circle. Strong wind move in circle. Circle रे इनती सर्किल रे से कहे गोलाकार आकार रे गोले 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 ऊपर को उठे बहुत जोर रे क्षिप्र बेगरे बहुत स्पीड ताको कौन कहा जाए A violent tropical storm in which strong winds move in a circle. गोटे मात्र लिखि दिया है तुम सुविधा पाई there has been a help in the text book. सुविधा पाई पिलाए सहज रे जानी पारिबे बोली गोटे लेटर लिखा है सी लेटर लिखा है सी कौन हबो वेरी इजी गोटे लेटर जदि दे देला गोटे लेटर दे देला बोले बॉक्स भीतर बाहर करवाटा बहुत सहज इट इज साइक्लोन साइक्लोन CYCLONE CYCLONE one cyclone first cyclone an extremely strong wind extremely बहुत परिमाण रे extremely it is an adverb strong wind extremely strong wind केते बेले भी को स्थान रे भी ही पारे पृथ्वी के को स्थान रे भी ही पारे संगे संगे हठात ही जाए strong wind का ताको कहा जाए गैल ताको कहा जाए गैल GAL गैल A violent storm with strong winds, especially in the western Atlantic Ocean. Question number 4 at page 13. Look at your book. A violent storm with strong winds. इटा भी बहुत strong winds है. सबू साइक्लोन मानकर सबू storm मानकर बहुत क्षिप्र बेगरे पवन बहे. Especially in the western Atlantic Ocean. वेस्टर्न अटलांटिक ओशन अटलांटिक महासागर रो पश्चिम भाग रे अटलांटिक महासागरीय पश्चिम भाग रे गोटे प्रकार वायलेंट स्टॉर्म देखा जाए तार ना कोन तार नाम कोन आर लेखा अछि माने हरिकेन HURRICANE 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 is the western Atlantic Ocean जदि अच्छे तुम लिखियो western Atlantic Ocean एमती गोटे क्वेश्चन आसी जइतबो a strong wind violent storm especially in the western Atlantic Ocean A B C D चारिटा थिबो A gale B cyclone C hurricane D typhoon एमती थिबो just we have left it question number 3 को हमें छाड़ी देला question number 3 देखो page 13 रे a violent tropical storm with very strong winds एटा भी tropical storm टिया strong winds रे सेटा होची टाइफून question number 3 टाइफून ए टाइफून है Question number 3 typhoon TYPHOON दुईटा स्पेलिंग एतार हुए पिले डबल ओ भी हुए गोटे ओ भी हुए टाइफून TYPHOON केतेक जगह रे OON आ केतेक जगह रे मात्र गोटे ON Question number 3 typhoon then question number 5 open at page 14 of your book a violent storm whose center is a cloud in the shape of a funnel गोटा भी violent storm whose center जार center ने केंद्रांचल जार केंद्रीय अंचल is a cloud in the shape of a funnel गोटे क्लाउड भलिया गोटे मेघखंड बड़ा विराट मेघखंड भलिया है जाए in the shape of a funnel कहाली विराट गोटे कहाली भलिया है जाए कौन हबो
गोटे लेखा अछि only one letter has been mentioned in your question, that is N, that is tornado. Tornado, Tornado, Tarnado. Tornado. Question number 6. A very strong wind that moves very fast in a spinning movements that causes a lot of damage. A very strong wind, बेटा भी strong wind, सब strong wind, बहुत क्षिप्र बेगरे बहुत बड़ा पवन that moves very fast, fast fast माने द्रुत गति रे बुहे in a spinning movement, घुरी घुरी जीवाटा spinning movement, घुरी घुरी जाए and cause a lot of damage, सेटा बहुत परिमाण रे क्षति घटाए, बहुल परिमाण रे क्षति घटाए. What is that? That is whirlwind. WHIRL. WHIRL. Whirlwind. This is the answer. Whirlwind. घुरी 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 गोटे पवन स्पिनिंग मूवमेंट रे जीवाटा मन रख जदि स्पिनिंग मूवमेंट अछि क्वेश्चंस रे जदि स्पिनिंग मूवमेंट अछि क्वेश्चन रे ताले आंसर हेबो whirlwind. Yes, this much. Question number 6 we have already read it. Then at page 14 match the sentences in column A with the meanings of hope in column B. होप रो नाउन भावे यूज हेछि. होप टा केते क्षेत्र रे भार भलिया यूज हेछि. आई होप द हेलस्टॉर्म पासेस क्विकली बहिर लिखा अछि. आई होप द हेलस्टॉर्म पासेस क्विकली. ई होप टा होछि भार, एटी भार भावे यूज हेछि. देयर वाज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड. ये अगर जो होपटा अछि सेटा नाउन भावे व्यवहार हेछि, नाउन भावे व्यवहृत होइछि. सो सेम गोटेटा बुझैछि जे इंग्रजी रे बहुत प्रकार शब्द अछि जो प्रकार शब्द की भार बाहु नाउनटा समान स्पेलिंग समान उच्चारण, सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन. जेमति होप केतेटा अछि अन्य प्रकार रो हुए नाउन भाव. सेटल सेटलमेंट अलगा, मैनेज मैनेजमेंट अलगा. डेस्ट्रॉय भार नाउन हेइबो डिस्ट्रक्शन अलगाटा गोटे हेइबो अलगा हेइबो. तो कोठी एमेंट एमईएनटी कोटा सन केउटा मैच केनटा एच एंटी पर लिया हुए. किंतु केतेटा वर्ड अछि बहुत परिमाण रे वर्ड अछि इंग्लिश लैंग्वेज रे जार की इंग्रजी रे same spelling same pronunciation like that. hope wash ei bhaliya gote शब्द wash, as for example wash, WASH. wash को तुमे भार भावे यूज करो. can you use the word wash as a verb in a meaningful sentence? yes. तो चिंता करिबो भाबिबो. very simple. I wash my clothes every Sunday. I wash my clothes every Sunday. मु every Sunday रे क्लास मु लुगा सफा करे. that is verb, सेटा verb हे गेला. नाउन रे कोन हबो? The color of my shirt faded just after one wash. The color of my shirt, color, this is the color, color means रंग. शार्ट रो रंग धोई गला छाड़ी गला. फैट माने छाड़ी बाटा एपीडी. जस्ट आफ्टर वन वाश थरे वाश करे छाड़ी गला. देटा में वाश को नाउन कला. गिव माय कार ए वाश, मो कार को धोई दिया. गिव माय कार ए वाश, वाश ता मैं से नाउन कला. इमते बहुत प्रकार रो यूजेस. सिंपली स्मोक, he smokes cigarette, एटा भार भेला. he smokes cigarette, स्मोक टा भार भेला. नाउन जदि करबा धुआं हे जीवो तार मीनिंग टा. the room was filled with smoke,
रूम वाज फिल्ड विथ स्मोक रूम टा स्मोक रे भर्ती होइदेला रूम कोठरीटा सेटा नाउन होइगला एई प्रकार नाउन आउ भार्ब यूज हुए गोटे स्पेलिंग गोटे प्रोनाउंसिएशन से भलिया अछि एचओपी होप मैच करिवो ए बी दुईटा कॉलम अछि कोडा गोटे मैच करे तो तुम टेक्स्ट बुक रे पिला लिखि दियो you should write it in your notebook in a pencil with a pencil you have to write it will you get the subject you want to study in a college number 1 b ro padha a feeling that something good will probably happen एमती अच्छी बहुत प्रकार अच्छी thinking that this would happen it may or may not have happened stopped believing that this good thing should happen कोटा है नंबर 1 रे कोटा है I hope so लास्ट अछि I hope so will you get the subject you want to study in a college I hope so ओके एटा होप अछि बोल्ड लेटर लिखा है बोल्ड माने टिके दाग लेटर लिखा है हाईलाइट करा है एचओपी होप को आंसर है wanting something to happen and thinking it quite possible thinking quite possible तुम भाबुछ एटा पॉसिबल है पॉसिबल अटे wanting something to happen तुम चाहूछ गोटे जिंस किसी गुड हेबो सेति पे कहै जे आई होप सो सो माने सेपरी मु सेपरी आशा करे ए कलम क्वेश्चन नंबर 1 सीरियल नंबर 1 रे आसीबो 1 चिन्हट कर दियो नंबर 1 दे देबा हमें बहिर हमें दे देबा नंबर 1 wanting something to happen एथिरे हमें नंबर 1 दे देबा पेंसिल रे विथ योर पेंसिल क्वेश्चन सीरियल नंबर 2 I hope you don't mind my saying this but I don't like the way you are going देखो एठी भी होब अछि एचओपी बही सेटा टिके प्रिंटिंग मिस्टेक अछि पिला टिके प्रिंटिंग मिस्टेक अछि भूल अछि नंबर 2 रे एचओपी होप को बोल्ड लेटर लिखा होई नै सेटा कोइ जाउ छै नाउ नै छी कि भार नै छी कोन होई छी से अनुसार मीनिंग जहा एक्सप्लेन करू छी हम बी कॉलम रे ताको चिन्हट करिवार अछि मैच करिवार अछि I hope you don't mind my saying this but I don't like the way you are arguing number 2 have the next showing concern that what you say should not offend or disturb to the other persons eta have showing concern that 2 3 this discovery will give new hope to HIV or AIDS sufferers eta have first b column ro first देखो चिन्हट कर दियो with your pencil a feeling that something serial number 4 we are hoping against hope that the judge would not notice our mistakes serial number 4 b column रे हबो लास्ट जोटा लास्ट लिखा है देखो पिले wishing for something to happen although this is very unlikely wishing for something एठारे सीरियल नंबर 4 गोटे 4 चिन्हट कर देबा पेंसिल रे सीरियल नंबर 5 I call early in the hope of speaking to her before she went to school I could early in the hope क्वेश्चन नंबर 5 कोटा हेबो बी कॉलम रो सेकंड टा बी कॉलम रो सेकंड माने द्वितीय टा थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन इट मे और मे नॉट हैपन एटा हेबो 5 बा 5 6 जस्ट व्हेन एवरीबॉडी हैड गिवन अप जोटा रहिला कोड को बळी पडला को जिंसरा बळी पडला जस्ट व्हेन एवरीबॉडी हैड गिवन अप बाकी जहाँ अच्छी नेक्स्ट पेज रे गिवन अप होप द फ्यूचर्समैन केम बैक
7 days after the cyclone. आशा छाड़ी देथिले सेटा आसिला हेटा हेबो 6 stopped believing that these good things would happen. एटा हेबो पिला माने बही रे क्वेश्चन जहा अछि गोटे लेसन सरी गला तमे भाइबो नै जे लेसन टा सरी गला then that means when and where our exercises all the questions of the book are not completed then the teaching of the lessons is also not over. पिला तमे भाबियो नै क्वेश्चन टा सरी गला एटा तो क्वेश्चन रे आसीबो नै मोर देखिबार दरकार नै परीक्षा रे नै पढे एटा परीक्षा रे पढिबो नै देखिबार मोर दरकार नै एटा भाइबा पिले भूल हमको काहे की क्वेश्चन काहे दला बही रे जदि माने परीक्षा रे केवल पढिबा भलियाटा देबा कथा ताले बही रे काहे की दला we must learn everything to gather knowledge in our brain होप टा कहा जाय छै नेक्स्ट क्लास रे हम आलोचना करिबा एटा 5 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मार्क्स 5 500 मार्क किया प्रश्न दिया जाय छी बोर्ड रे पढे व्हाट हैपेंड टू लेंचोस क्रॉप्स आफ्टर द हेलस्टॉर्म लेंचोर कॉर्नफील्ड कोन हला कुआ पत्थर माड़ परे 5 मार्क रो एटा आंसर हमको लिखिबा पड़िबो व्हाट वाज लेंचोस ओनली होप आफ्टर द कॉर्न वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड लेंचोस रे एकमात्र आशा किमा भरोसा कोन थिला जेते बेले तार कॉर्न टा कंप्लीटली माने पूरा भागे ध्वंस होई गला क्वेश्चन नंबर 3 हाउ डिड द पोस्टमास्टर हेल्प लेंचो हाउ डिड द पोस्टमास्टर हेल्प लेंचो पोस्टमास्टर किपर भाबरे लेंचो को सहायता करिथिले हमें 50 वर्ड्स भितरे 50 टी शब्द भितरे यार आंसर लिखिबार अछि परीक्षा एई बलिया प्रश्न पचारे क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर ता द्वितीय चिठी रे लेंचो कोन लिखितिला एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड but 5 what did लेंचो say about the raindrops विषय रे लेंचो कोन कहितिला पहला नेक्स्ट पीरियड रे हमें एई क्वेश्चंस गुडा कर सॉल्व करिबा तापरे हमें नेक्स्ट चैप्टर को जीवा जो चैप्टर टा अछि and you all should attend the class very mindfully and listen to us that we shall help you. This is a free lessons for you. Okay, this was my dear students. Thank you.